Okay, so we'll look at that RFM wala case. Case में क्या बोलते हैं? RFM wala question, as it were, and the pivot table and all of that we'll see. Okay. Now the first step, the critical step here is to import the data correctly. Yeah, we're recording. The first step is to import the data correctly because I remember class में दिक्कत हो रही थी कि date का format हिल जा रहा है. So we'll just ध्यान से from file, from text and CSV. एंड मैक में अगर कुछ नहीं हो रहा तो लाइक गूगल कर लेना है, मेरे को नहीं पता. अह, जो भी CSV फाइल में अगर डेटा है तभी ये दिक्कत है, अदरवाइज वी कैन कॉपी पेस्ट. बट CSV फाइल है तो प्लीज ओपन इट ऐसे मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे. लेट इट लोड एंड ऑर्डर डेट इट विल अपने आप इट विल रिकॉग्नाइज एज अ डेट बेसिकली और फिर लोड कर लेते हैं. दिस जस्ट अ I mean, I don't know the technical reasons, but in my experience, I've found that this is a uh, risk-free rate to import data from CSV, in my opinion. ठीक है, तो इसको भी पड़े रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शीट इतनी भी बड़ी नहीं है. फिर उसको कॉपी करके एक बाजू में एक शीट बना दी. अभी हमें जो रेलेवेंट जो चीज है वही रख रहा हूँ. अभी मैं बताता हूँ कॉलम्स कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है ना. तो कॉलम माउस से क्लिक करके, राइट क्लिक करके पूरा कॉलम डिलीट कर सकते हैं. वैसे ही आ, पूरा रो भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं. तो अभी देखो ऑर्डर डेट हिल गया है वापस, है ना. तो इसको सिलेक्ट करो और क्लिक ऑन शॉर्ट डेट. अभी पूरा टेबल सिलेक्ट करो, फिल्टर लगाओ कंट्रोल शिफ्ट एल से, और बाय गोइंग टू डेटा एंड अप्लाई क्लिकिंग ऑन फिल्टर जैसे भी करना. एंड जस्ट ओपन एंड मेक श्योर कि सब कुछ 2021 का ही डेटा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब डेटा टाइप चेंज करते हो ना, तो कुछ गड़बड़ होती है जिसकी वजह से 1900 डिफॉल्ट ईयर पे चले जाते हैं, 00 पे चले जाते हैं. कभी कभी ये दिक्कत हो सकती है, तो जस्ट मेक श्योर कि ये दिक्कत नहीं हुई है. शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट रखने की जरूरत नहीं, आई डोंट नो, लॉन्ग डेट वुड इंक्लूड टाइम आई थिंक, बट रिगार्डलेस. अभी हाँ, तो हमें क्या करना होता है, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू, राइट. तो हमें ऑर्डर डेट चाहिए, मतलब लास्ट टाइम कब ऑर्डर किया था वो चाहिए. ऑर्डर आईडी चाहिए क्योंकि वेल ऑर्डर आईडी चाहिए क्योंकि आई मीन हर ऑर्डर का एक यूनिक नंबर होगा ना. शिप डेट की जरूरत नहीं है, गेस शिप मोड की जरूरत नहीं है. कस्टमर आईडी चाहिए क्योंकि एक कस्टमर के दो ऑर्डर हो सकते हैं, तो हमें उसको फ्रीक्वेंसी में उसकी वैल्यू 2 चाहिए, राइट. इसलिए कस्टमर आईडी भी हमें रिकॉर्ड करना. कस्टमर नेम रखना हो तो रख सकते हैं. टाइप ऑफ कस्टमर वी में वांट टू एनालाइज डेटा फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स एक साथ, तो दिस मे बी यूजफुल बट नॉट, क्लास में नहीं हुआ था, तो हम अभी हटा रहे हैं इसको. और क्या हटा सकते हैं, सेल्स रख लेते हैं. क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ये एक्चुअली मैं होता तो मैं तो सब कुछ रखता ही और फिर पिवट सिलेक्ट करके कर लेते, बट रिगार्डलेस इट डजंट मैटर. तो हाँ, आई थिंक मैम ने इसमें से सेल्स ही रखा था, ये दोनों हटा दिए थे, बट अभी रखते हैं इन केस कुछ एनालिसिस अगर सूझ जाए हमें करने को. ठीक है, तो ये कॉलम्स हटा दिए, फिर इंसर्ट गए, पिवट टेबल में गए, फ्रॉम टेबल रेंज सेलेक्ट किया. अब उसने अपने आप रिकग्नाइज कर लिया कि यार ये टेबल जैसा कुछ तो दिख रहा है, तो इसी की बात कर रहा होगा, ऐसा उसने मान लिया. तो A2588 लेफ्ट टॉप से G2588, समझा. और इसको हम पिवट टेबल हमें करना है न्यू वर्कशीट के अंदर, या फिर इसके बाजू में भी कर सकते हैं, बट ऑलवेज बेस्ट टू कीप इट इन न्यू वर्कशीट इन माय ओपिनियन. तो हमने कर लिया. अभी हमें क्या करना है, पिवटिंग का मतलब क्या है. पिवटिंग इज बेसिकली अभी डेटा इज अवेलेबल एट ऑर्डर आईडी लेवल. हर ऑर्डर आईडी का या हर एक रो आईडी, देयर इज अ डिफरेंट रो फॉर एवरी ऑर्डर, और हमें हमें कस्टमर लेवल पे एनालिसिस करना है. तो बेसिकली हर कस्टमर के लिए, ये अगर मैं कस्टमर इधर ले जाऊं, बराबर एक सेकंड के लिए जस्ट बेयर विथ मी. कस्टमर को मैं बाजू में ले जाऊं और मैं अगर डुप्लीकेट्स हटा दूं, जस्ट डोंट आस्क मी हाउ आई डिड दिस, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ. मैं अगर डुप्लीकेट्स हटा दूं तो आप देखोगे कि बहुत सारे रोज कम हो गए, इतने ही रिकॉर्ड्स बचे. उसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा वो है. एंड नाउ यू वांट कि कितनी बार उसने मंगाया है, तो तुम काउंट इफ लगा सकते हो कि भाई, काउंट इफ लगा सकते हो कि कस्टमर आईडी
ये कितनी बार है, तो टू, तो उसका फ्रीक्वेंसी टू होगा। तो ये एक तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। उसके मॉनेटरी वैल्यू तुम सम इफ करना पड़ेगा कि सेल्स का सम कर दो हर वो जगह पे। हाँ सॉरी माय बैड। जहां जहां पे भी ये मैच करे वहां वहां पे उस सम सेल्स का सम कर दो, समथिंग लाइक दिस। है ना? तो ये देखो, CG 12 5 2 0 कस्टमर है, मान लो सोहम नाम है उसका, तो उसने 2 बार मंगाया सेम तारीख पे। तो उसकी टोटल हमें रेवेन्यू उससे मिल रही है इधर 261.96 प्लस 731.94, विच टोटल अप टू 993.9। और इधर से हमें समिफ से भी हमें ये मिला। अब ये समिफ काउंटर्स नहीं समझ में आया तो ठीक है, फॉरगेट इट, यू डोंट हैव टू डू इट, बट माय व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये चीज हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। उससे अच्छा यही सेम चीज विच इज कॉल्ड पिवटिंग, बिकॉज यू अभी द टेबल इज ऑन रो आईडी लेवल एंड यू वांट टू पिवट इट एट कस्टमर आईडी लेवल एंड रोल अप काउंट्स एंड सम ऑफ सेल्स रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी है। तो इस उसको पिवटिंग करना बोलते हैं जनरल, आई मीन डेटा की भाषा में। तो वो पिवट एक्सेल खुद करके देता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? रो आईडी हमें जरूरत नहीं है, ऑर्डर आईडी की जरूरत नहीं है, हमें लेफ्ट मोस्ट में कस्टमर आईडी चाहिए। तो भाई कस्टमर आईडी को खींच के रोज के अंदर ड्रॉप कर दो। चलो कस्टमर आईडी अभी अभी इधर अगर तुम देखोगे तो सी से सब स्टार्ट हो रहा है, इसको इधर ले आते हैं, लेफ्ट टू राइट अरेंज करते हैं। हाँ, और इधर देखोगे तो सब सी से स्टार्ट हो रहा है, इधर देखोगे तो ए से स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, इट्स जस्ट दैट पिवट बाय डिफॉल्ट विल अल्फाबेटाइज इट। नंबर है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है, लोएस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता है। दैट्स जस्ट गुड डेटा हाइजीन। एनीवे, सो कस्टमर आईडी के अगेंस्ट हमें क्या चाहिए? काउंट ऑफ ऑर्डर्स, मतलब ऑर्डर आईडी में ये कस्टमर कितनी बार रिकॉर्ड में प्रेजेंट है, ये चाहिए। अभी ये शीट ऑर्डर आईडी लेवल पे है, तो अगर इस कस्टमर का ऑर्डर आईडी अगर मैं कितनी बार आ रहा है वो देख लो, टू। ये अगर हर कस्टमर के लिए मेरे पास काउंट आ जाए तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो हाउ डू यू डू दैट? यू पुल इन द ऑर्डर आईडी, ब्रिंग इट टू वैल्यूज, और इधर देखो, इधर काउंट है, ऑटोमेटिकली काउंट आया। इफ यू वांट टू चेंज इट, यू डबल क्लिक ऑन इट, और यू सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन फ्रॉम हियर, गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग एंड चेंज व्हाट यू वांट टू शो। ठीक है, बट ऑर्डर आईडी के लिए, ऑर्डर आईडी से हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए विच इज काउंट। कि भाई ये ये रो लेबल which we know is customer ID appears in this table 4 times. How do we check that? कंट्रोल एफ करके देख लेते हैं एक बार। ये एक बार आया, ये दूसरी बार आया, ये तीसरी बार आया, ये चौथी बार आया, एंड दैट्स इट। या फिर मैं फिल्टर करके भी देख सकता हूँ, 4 बार आया। ठीक है, अब ये फिल्टर मैं फटाफट कर रहा हूँ जस्ट बताने के लिए, but you can trust the output of the pivot table as long as you selected the table correctly when we clicked here। हाँ, तो काउंट ऑफ ऑर्डर आइडिया ये फ्रीक्वेंसी का सेंस दे रहा है। इसे ऊपर लिखना हो तो लिख सकते हैं। फिर हमें रिसेंसी का सेंस चाहिए तो क्या लेना होगा? सो हम बता, इधर इधर अपने पास इतना डेटा है। लास्ट डेट, हाँ, लास्ट टाइम कब ऑर्डर किया था, ऑर्डर डेट, एग्जैक्टली ऑर्डर डेट। तो हम आ, हाँ ओके, बाय द वे, अगर तुम दो शीट के बीच में नेविगेट करोगे और ये अगर गायब हो जाए, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ दिस ब्लू टेबल विच इज द एक्टिव पिवट टेबल। द रो लेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। क्यों नहीं हो रहा है? डबल क्लिक, मे बी डबल क्लिक से होगा। ओके, और मे बी यू जस्ट क्लिक ऑन द पिवट टेबल। व्हाट जस्ट हैपेंड? is there a drop? There has to be, right? But why can't I access it? Uh-oh. Give me a second. I'll just pause record. Yeah, sorry. So the Zoom meeting control, that floating toolbar thingy was getting in the way. So you just have to click on design or something. इधर से आ जाना चाहिए। हाँ, टा फील्ड सेटिंग्स probably।
Where is that thing? How do we get Pivot. the What's the name? design? Mhm. Uh, Pivot chart. no, sorry. Sorry, it's just that I'm not very familiar with. I haven't used pivot tables in life. Um, maybe we resume the recording a bit too early. All right, hopefully this time we get it. So the idea is to you go to any active part of the pivot table. There will be a additional tab called pivot table analyze, and you select field list or toggles field list, and we'll get the original thingy back. Yeah, and then if you want to do a sales sum, that will give us the monetary value, right? Sorry, we were doing order date. We were doing recency. So order date, you drag and drop from this field right here to values. And now you don't want count of order date. What do you want? You want maximum order date corresponding to whatever this corresponding to each and every customer. You want not count maximum of order date. Now, Latest. how why will latest. In English, it will be latest, but because Excel has recognized it as date, quote unquote, max will correspond to latest, if that makes sense. So we'll just click on value field. So how I got here is I double clicked on whatever I want to edit, or I clicked on that little drop down, and then I clicked on max here, max of order date. Just make sure that you selected the right thing by checking all of this here, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए. ये सब देख के एक बार चेक कर लेंगे. ठीक है, ओके कर लिया. अभी देखो फिर से हिल गया ये ऑर्डर डेट, फिर से हिल गई. तो मे बी यू माइट वांट टू Short date. I don't know if it will work. Let's see. None of this happened in class while I was doing this. Yeah. Okay, thank God. But So we'll just do a. So it's always good to do a couple of spot checks, especially if you're not familiar with the technique. How you do that is either Control F, search for a value, make sure that the latest date is actually 10/11, right? So just data hygiene. You don't have to do it if you're comfortable, you're sure, but I'm not, which is why I'm doing this. So max of order date से recency का सेंस आ गया. अभी monetary का सेंस हम कहाँ से लाएंगे? sales. या सेल्स से या प्रॉफिट से भी ला सकते हैं, आई थिंक, बट आई थिंक क्लास में सेल्स लिया था. आई थिंक सेल्स लिया था क्लास में. विल चेक. Makes Sales makes more sense. I agree. We'll check still. Don't want to get it wrong on video. So all of this is on the same shared link that y'all have, which is present in that group description. But monetary is sales या फिर average of sales. Average of sales. Yeah. So sum of sales अगर तुमने दे लिया, you can always then divide that value by the count to get the average value. Or what you can do is now this is like ये खुद का preference है, कोई कैसे कर रहा है. I don't think ma'am will penalize if we do it that way, but let's just do what ma'am did. So average of sales ले आया, ठीक है. ये RFM हो गया पूरा, albeit in a different order. Maybe if we can drag and drop and change the order. So what we can do is हमें जिस ऑर्डर में वैल्यू चाहिए ना, उस ऑर्डर में वी कैन रीअरेंज. सो हम हमें रिसेंसी पहले चाहिए, मैक्स ऑफ ऑर्डर डेट, फ्रीक्वेंसी इधर चाहिए, और ठीक है. तो अब RFM हो गया. अब ये डेटा आइडियली हम कुछ भी एनालिसिस करें वो पिवट टेबल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, लाइक ये डायनामिक है. तो वी हैव टू कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट एज वैल्यू बाजू में जाके नए शीट में जाके. तो व्हाट यू डू इज कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड शिफ्ट अप, so that the grand total row is not selected. If you don't know how to select ऐसे keyboard से, it's okay. You can just
to like this, पीछे से जाते रहो, this too much तो, और you can just do this, कंट्रोल सी कर लो, बाजू में जाके पेस्ट कर दो, मैन्युअली हटा दो जो नहीं चाहिए तुम्हें, दैट ऑल्सो वर्क्स, डजेंट मैटर, ठीक है. But the thing is, it will still count as that as a pivot table. That is the problem. Therefore, you will have to use something which is known as paste special. तो कंट्रोल ऑल किया, बाजू में गए, राइट क्लिक किया, फिर पेस्ट ऑप्शन दिख रहे हैं ना, उसमें वैल्यूज पे क्लिक करना है. Control shift V, I think. Yeah, I think so. What I the shortcut that I use, so someone is saying it is Control Shift V. Let's try that. Control Shift V. It's not working for me, but yeah, I'm sure there is a shortcut to that also. What I use is Alt S, and then I click on values. That is the shortcut I use. Doesn't matter really. Just get it working, and then short date की तरह आ जाना चाहिए. And every time you make sure, do like a rough spot check कि सही से convert हुआ है. Excel and dates का 36 का आंकड़ा है, कुछ भी कभी भी हिल सकता है. Never trust Excel with dates. Yeah, हो गया. I think this is it. Maybe we can insert a row here, which is right click, insert entire row. What I like to do is Alt HIC and Alt HIR. But anyways, you can do insert. And maybe you want to write little comments here. This is recency, this is frequency, this is monetary. ठीक, अब ranking करना है, right? I'll just make sure we are doing everything as per what ma'am taught us. Yeah. So ranking के लिए क्या होता है? एक percentile and deciling is a concept. Percentile we all हमने काट दिया है. Now 0 to 10th is one bucket, is one decile, lowest decile. जैसे quartile होता है, 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100. वैसे decile is just 10, 10, 10 buckets. So percentile 0 to 10, 10 to 20, and 90, and 90 to 100. Those will be the 10 buckets. And correspondingly, you would want to give them rank as 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I think it is 0, 1. Yes, it is 0, 1. Yeah, 0 through 9. Correct. So that makes it 10, right? 0 matlab starting from 0 percentile to 10th, 9th percentile, and so on. So how do you do this? Well, recency, what I'll do is just create SA column, recency, frequency, monetary, and just write the formula. So the formula is percentile.exe. Now don't ask me what exe is. There's an explanation, but let's not get into it right now. We'll click percentile.exe. Voice record हो रहा है ना मेरा? Hello, hello. Yeah. हाँ, percentile.exe. Now किसका करना है? Percentile. Recency is what? इसका dates का. Yes. तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट किया. Maybe we don't want to, we want to freeze the rows here only. So we press F4 2 times because we don't want to, because we want to use the same formula for frequency and monetary also, which is why we froze it. Like if it doesn't make sense, wait a couple of minutes, it will make sense to you. So we froze it strategically, and K I think will be 10 if I'm not wrong. No, K is not 10. Okay, sorry, this is not the formula. The formula is percentile rank, percent rank .exe. My bad, my bad, my bad. Percent rank.exe is the formula. We select that array, you write 10, and the significance is 1. Okay. What is the significance? We'll get to it. Okay. Sorry. Yeah. Sorry, I'm getting a bit confused. So it will percent rank by default will bucket it into desk groups. It will make 10 buckets. We don't have to give 10. This is this. X is the
entry for which we want to find rank. So how you read this is, and significance you just press one, I think. Yeah. So how you read this formula is, In this in array, this array, what is the rank of this value? That is how you read this. And significance of one is just, I think it's just decimal places का कुछ तो scene है. oh, okay. Decimal places. And now, if you double click this and paste it across, now if you notice all of this, हम फटाफट से अगर एक filter लगा दें, you don't have to do the filter वाला thing in exam. I'm just explaining you we are building the formula exam. तो अगर इधर देखो तो सब वन वन डेसिमल वाला है. तो व्हाट दिस मीन्स इज कि ये वाले जो है वो सारे जीरो रैंक वाले हैं, ये वाले वन रैंक वाले, टू वाले रैंक वाले, और ये वाले नाइन रैंक वाले. सो व्हाट डू यू वांट? वी वांट इसका मल्टीप्लाइड बाय 10. हाँ, वो कुछ हो गया पंगा, कोई बात नहीं. अपन डेटा टाइप चेंज कर लेंगे. डेटा टाइप चेंज कर लेंगे. हाँ, वो कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है. डेट तो कभी भी कुछ भी चीज डेट में कन्वर्ट हो जाती है अचानक से एक्सेल में. सो इसमें अगर देखो तो 0 से 9 के बीच में वैल्यू होगी. दिस इज व्हाट वी वांट. दिस इज द रैंक. सम पीपल वुड प्रेफर 1 to 10. So what you do is just add a 1 here. So 0 will become 1, 9 will become 10. So मैम ने ये नहीं करा है. आई डोंट थिंक करने की जरूरत नहीं. अब इस यही फॉर्मूला को बाजू में भी कॉपी कर दिया. तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ? ये अरे में इसका क्या रैंक है? विद डेसिमल वैल्यू ऑफ 1 इनटू 10 कर दो. सेम चीज इधर भी कर लिया. एंड देन यू कॉपी पेस्ट इट अक्रॉस. दैट्स इट. नाउ व्हाट वी कैन, इसका इंटरप्रिटेशन हम ये लिख सकते हैं कि you can decide how much importance you want to give to each of these components. For example, if someone has been a very, let's say 6 is the threshold. 6 is very high. 6 and above is very high. Let's arbitrarily for now. Let's say recency is very high. Frequency is also very high. But monetary is low. Now, how do you rank these? Would you rank these customers? Now, these are real people, right? You understand? These are real people. These are customers. How would you rank them? How much weightage are you giving to R, F, and M will decide that. So you can read this data in multiple ways. You can give a composite rank by giving weights to each of these components. You can do a lot of things. So interpretation is according to business objective, according to marketing objectives. You will give weights to each of the component, RFM. It is possible कि सबको equal weight दे दो. तो इसको 0.33 से मल्टीप्लाई करो, इसको 0.33 से मल्टीप्लाई करो, इसको 0.33 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो. एंड दैट इज योर फाइनल रैंक फॉर द कस्टमर. दैट्स हाउ यू डिसाइड हाई वैल्यू. और यू कैन डिसाइड आर एफ एम RFM, सॉरी, RFM की वैल्यू की रेंजेस तुम दे दो कुछ भी करके. ठीक है. एंड देन यू डिसाइड कि ये हाई है, ये मीडियम है, ये लो है. ठीक है. कि R, if R is between this and this, while F is if R is greater than 6 and F is greater than 4, and but monetary has to be greater than N, only then will we say high. Whatever you want to define, you can define. ये मैम ने कराया नहीं है, मैम ने डिस्कस किया था, मैं जैसे डिस्कस कर रहा हूँ. दैट्स इट. RFM हो गया. थैंक यू. बाय बाय.